जरा सोचो कि तुम एक स्पेस के अंदर फ्लाई कर रहे हो और अचानक से तुम एक डार्क एब्यूज के अंदर खींचने लग जाओ। रियलिटी के अंदर तुम ये चेंजेस जानते हो एंड तुम्हें ये फील होने लगता है कि तुम स्ट्रेच हो रहे हो। You are falling into a black hole, one of the most astonishing place in our universe. कुछ ब्लैक होल्स इतने बड़े होते हैं कि वो अपने अंदर 60% से ज्यादा सोलर सिस्टम को फीड कर सकते हैं एंड उनका मास हमारे सन से 100 बिलियन टाइम्स ज्यादा होता है। और अगर तुम एक बार कर्टेन पॉइंट को क्रॉस कर लेते हो तो वहाँ से कोई भी चीज एस्केप नहीं कर सकती, शायद कर भी सकती है। तो सवाल ये है कि अगर तुम ब्लैक होल में गिर जाते हो तो व्हाट वुड एग्जैक्टली हैपन विथ यू एंड तुम्हें कैसा फील होगा। एंड हमारी नई साइंस का क्या कहना है कि व्हाट इज द एक्चुअली हैपनिंग इनसाइड अ ब्लैक होल। One of the strangest things in existence. A mathematical enigma. He's come face to face with the structure of space and time. Now let me leave, man. Spaghettification. Black holes ain't so black. Nature doesn't work that way. It's the most wonderful thing. It's incredible. सोचो कि मैं और तुम एक मिशन पे जा रहे हैं ब्लैक होल में गिरने के लिए और हमारे पास एक इमेजिनरी स्पेसशिप है जो हमें जितना दूर और जितनी स्पीड में चाहिए उतना हमें ले जा सकती है। लेकिन अब क्या? सो व्हाट इज द ब्लैक होल एंड हाउ वी फाइंड देम? सो बेसिक आइडिया क्या है ब्लैक होल का कि मान लो तुमने एक सन को लिया है और एक स्टार को लिया है जिसका मास सन के बराबर है और अब तुम उसे कोलैप्स करते जाते हो, उसे स्क्वीज करते जाते हो और स्क्वीज करते हो और तब तक स्क्वीज करते हो जब तक उसका रेडियस सिर्फ 3 किलोमीटर नहीं बचता, सिर्फ 3। अगर तुम इतने सारे मास को एक छोटी सी जगह पे कंप्रेस कर दो तो उसकी सरफेस पे ग्रेविटी उतनी ज्यादा हो गई होगी कि अगर तुम्हें वहां से एक्सेप्ट करना है तो तुम्हें लाइट की स्पीड से भी ज्यादा मूव करना पड़ेगा एंड इसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, जो कि लाइट की स्पीड से भी ज्यादा होगी। और अगर लाइट रेस भी वहां से निकलने की कोशिश करेगी तो वो भी वहां से निकल नहीं पाएगी, वो वहीं पे स्टक रह जाएगी। एंड दिस इज द ब्लैक होल, एक ऐसी जगह जहाँ पे मास और ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि लाइट भी वहां से एक्सेप्ट नहीं कर सकती। शुरू में ब्लैक होल सिर्फ एक मैथमेटिकल क्यूरियोसिटी थे, एक अजीब से सॉल्यूशन थे इक्वेशंस के जो बाकी यूनिवर्स के साथ मैच करते थे एंड ये सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था। लेकिन फिर धीरे धीरे साइंटिस्ट ने ब्लैक होल्स को ढूंढना शुरू किया। डेकेड्स तक उन्होंने स्टार्स, गैलेक्सी और गैसेस की मूवमेंट को स्टडी किया जो कि एम्प्टी स्पेस के पैचेस में डिस्ट्रॉय हो रहे थे, जो अब हम जानते हैं कि वो कोलैप्सिंग स्टार के बीच का हिस्सा जो कि हमारे सन से काफी बड़े थे। एंड फाइनली हमने डिस्कवर कर लिया कि ब्लैक होल रियल में होते हैं एंड आज हम जानते हैं कि वो हर जगह यूनिवर्स में है। कुछ एस्टिमेट्स ये कहते हैं कि यूनिवर्स में 14 क्विंटिलियंस ब्लैक होल्स हो सकते हैं और ऑलमोस्ट हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, इंक्लूडिंग हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में भी। तो चलो चलते हैं। सोचो कि हम अपनी गैलेक्सी के सेंटर के ब्लैक होल को सिलेक्ट करते हैं जिसका नाम है सैजिटेरियस ए एंड मुझे याद है कि मैंने इसका एक फोटो भी लिया था। तो यहाँ पे जो लाइट दिखाई दे रही है फोटो में वो ब्लैक होल से नहीं आ रही, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि ब्लैक होल्स लाइट्स को भी ट्रैप कर लेता है। तो जहाँ से ये लाइट आ रही है उसे कहते हैं एक्रेशन डिस्क एंड दिस इज द अनदर वे टू फाइंड अ ब्लैक होल बाय द साइंटिस्ट। कैसे? उनकी ग्लोइंग एक्रेशन डिस्क को स्पॉट करके। सोचो कि मटेरियल स्पाइरल करता है एक डेंस ऑब्जेक्ट के अराउंड एंड बहुत वायलेंसली घूमता रहता है एंड इस रोटेशन से मटेरियल हीट होता है और एक लाइट प्रोड्यूस होती है। वेट, तो इस फोटो में एक्रेशन डिस्क साइड में क्यों नहीं दिख रही? टर्न्स आउट हम इस ब्लैक होल को ऊपर से देख रहे हैं। अगर हम इसे एज से देखते तो कुछ और ही अजीब चीज होती। जो हम देखते हैं वो होता है एक्रेशन डिस्क के फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में, क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी लाइट को बेंड कर देती है। So imagine this disk of material around this thing. Then light rays, let's say from your perspective, from behind the black hole, go around into your eyes. Sometimes they orbit and then go around into your eyes. And they go into your eyes from every point on the disk, from underneath and at the top and behind. So you have light rays going always around this thing. So you see that. That's what you see as an image. तो अब हम हमारी स्पेसशिप से थोड़ा और करीब जा रहे हैं। जैसे जैसे मैं अप्रोच करता हूँ मैं सोचता हूँ कि ये चीज कितनी बड़ी है। तो साइंटिस्ट के हिसाब से सैजिटेरियस ए का मास है हमारे सन से 4.3 मिलियन टाइम्स ज्यादा। लेकिन अगर इस ब्लैक होल को हमारे सोलर सिस्टम में डाल दिया जाए तो ये मर्क्यूरी की ऑर्बिट का 1/5 हिस्सा कवर करेगा, मतलब शॉकिंगली स्मॉल है अपने मास के कंपैरिजन में। और अगर दूसरे ब्लैक होल के साथ कंपैरिजन करेंगे तो हमारा ब्लैक होल सिर्फ मीडियम है। अब बात करते हैं कुछ दूसरे ब्लैक होल्स की। दुनिया का सबसे छोटा ब्लैक होल यानी कि J1650, इसका डायमीटर सिर्फ मनहट्टन जितना है, लेकिन इसका मास है 3.8 टाइम्स हमारे सन का। तो अब एक
एक स्टेप ऊपर चलते हैं, मेशियर 15। इस ब्लैक होल का डायमीटर अर्थ से लगभग 2 गुना है एंड इसका मास 4000 सन के बराबर है। सो अब हम आ चुके हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल की लोअर लिमिट तक। सो ये वाला जो ब्लैक होल है वो हमारी सन के डायमीटर्स का आधा है, लेकिन इसका जो मास है वो 1 लाख टाइम्स ज्यादा है। और अब आता है सैजिटेरियस से हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का सेंटर का ब्लैक होल। लेकिन अब बात करते हैं कुछ ट्रूली इंसेन चीजों की। M87 सुपर ब्लैक होल, इसका मास है 5.4 बिलियन सन्स के बराबर। हमारी पूरी सोलर सिस्टम इसके अक्रॉस 4 बार फिट हो सकती है एंड 2019 में इसका पहला फोटो हमने कैप्चर किया था। और फिर आता है एक मॉन्स्टर टॉन 618 और ये ब्लैक होल 66 बिलियन टाइम्स ज्यादा मास रखता है हमारे सन से एंड इसके अंदर हम पूरी 40 सोलर सिस्टम इजीली फिट कर सकते हैं। पर शायद ये भी सबसे बड़ा नहीं है। फोनिक्स इन नाम का एक ब्लैक होल है जिसको देख के लगता है कि वो 100 बिलियन सन्स के मास का होगा और क्योंकि फोनिक्स से हमसे ज्यादा पास है तो हम उसे रिलेटिवली अभी देख सकते हैं, जबकि टॉन 618 हमसे दूर है तो शायद जब तक हम उसे देखें वो बड़ा हो सकता है। और ये तो सिर्फ वो ब्लैक होल्स है जिनको हम जानते हैं, शायद स्पेस में इससे भी बड़े मॉन्स्टर छुपे हैं। अब क्या हो रहा है? तो अब ये हो रहा है कि हम धीरे धीरे ब्लैक होल के पूल में आने लगे हैं। सो वी आर फॉलिंग इनटू अ ब्लैक होल एंड हमारी जो स्पेसशिप है हम उसे बंद कर देते हैं। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ फ्री फॉल करेंगे, जिसको हम फ्लोटिंग भी कहते हैं, जिसे एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में करते हैं। हम बस सिर्फ गिर रहे हैं और कुछ भी फील नहीं कर रहे। तो सोचो कि हम इसी रूम में बैठे बैठे ब्लैक होल की तरफ गिरते जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा। तो एक्रेशन डिस्क के थ्रू गिरते हुए हमें क्या क्या हो सकता है? क्या हमें मटेरियल टकरा सकता है या क्या हमें डैमेज होगा? You're absolutely right. It's a bit nasty around these things. But let's say that our room, this spacecraft, is magically insulated from radiation and heat and all those things. Then nothing. One of the most shocking things, from the point of view of someone outside, the description is very different. सोचो तुम जो इस वीडियो को देख रहा है, अगर तुम एक सुपर पावरफुल टेलीस्कोप से मुझे देख रहे हो तो जब हम 26,000 लाइट ईयर दूर एक ब्लैक होल में गिर रहे होते हैं तो क्या दिखाई देगा? So what would they see happening to us as we fall towards this thing, as we approach the black hole? If they could see our watches, they would see our time tick more slowly, more slowly, more slowly, and they would see our time stop on the horizon. Stop, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ब्लैक होल के आसपास दो अलग जर्नी चलती है, एक जर्नी जो हम फील करते हैं और एक दूसरी जर्नी जो तुम देखते हो, और ये दोनों ही जर्नी डिफरेंट है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्लैक होल्स अपने आसपास के टाइम और फैब्रिक को बेंड कर देता है। And that's absolutely central. There's nothing weird. Well, there's something weird there, but there isn't, according to Einstein. आइंस्टाइन को रियलाइज हुआ कि स्पेस और टाइम दो एक ही चीज है। स्पेस टाइम इज स्ट्रेचिंग। Space-time responds, warps or curves, to matter and energy in the universe. The theory that Einstein published will say, give me like a ball of matter, and the equations will tell you how the fabric of the universe is distorted. और ब्लैक होल स्पेस टाइम का सबसे एक्सट्रीम डिस्ट्रॉयशन है, ये हम जानते हैं। ब्लैक होल के आसपास रियलिटी चेंज हो जाती है। हमें लगता है कि बाहर का यूनिवर्स तेज चल रहा है और तुम्हें लगता है कि हम स्लो मोशन में मूव कर रहे हैं। फिर आता है इवेंट होराइजन, वो लाइन जहाँ से लाइट भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। हम जब इवेंट होराइजन को क्रॉस करते हैं तब हम कुछ स्पेशल फील नहीं करते, पर तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि हमने कुछ भी क्रॉस नहीं किया। They would किया। never see us fall in. From the point of view of someone outside, nothing goes into the black hole ever. Do they see us imprinted there forever, or does the light from us slowly fade until this light is climbing away through this gravitational field, so it's getting stretched, so we get redder and redder and redder, infinitely redshifted. पर हमारे नजरिए से पीछे कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं है। You can write the equations as a space being like a river that flows into this thing, almost like a sinkhole or something in space. And the river of space flows at the speed of light inwards on the horizon, and then faster than light inside. So if you imagine that you're a photon, a particle of light, you're like a little fish swimming against the tide. But if the tide's going at the speed that's as fast as you can swim, the speed of light, you can't get out. और अब हमने इवेंट होराइजन को पास कर लिया है। gravity is increasing faster and faster? And this is where we get to maybe my favorite word that I have learned in the process of this. My understanding of this is when the gravity at your feet is so different from the gravity at your head that you begin to stretch in a very dramatic way, and this is spaghettification. Yeah. Could you explain what is happening here? Yeah. Another way of thinking about it is just that the distortion in space-time is not constant
over the length of your body. It's not only stretching, it's also a squashing. You start to feel this strange sensation of being stretched and squashed. And as you go closer and closer to the singularity, those effects become much more extreme, until they're so extreme that, first of all, you cease to stay together. We're one long string of atoms? Yeah, Well, what are we now? and then the atoms get separated, and then the protons, the quarks inside the protons will get separated, and ultimately everything is gone. Everything's been ripped apart. And all the ripped apart pieces that used to be us are still racing inward toward the singularity. I think it's really tempting to picture it as some infinitely dense point to which this star collapsed. But since a black hole is a distortion of space-time, the singularity is not just a place, it's also a Moment in time. And it's in fact the end of time in Einstein's theory. Then it's really beautiful because you think it becomes something that's in the future for anyone or anything that crosses the horizon. So it's like if you say, well, I want to escape this thing, it's like saying, I want to escape tomorrow. If I said to you, let's run away from tomorrow, you go, I can't run away from tomorrow, it's in the future. That's what this thing behaves like, singularity. So we have passed through the event horizon, we have been spaghettified, we have hit the end of time. The question is, can we ever get back out? So the answer is, according to Einstein's theory, no. Einstein would say it's all over. You've got ripped to bits. You've gone to this infinitely distorted space and time, and it's just done. What would Stephen Hawking say? In his words, he discovered that black holes ain't so black. Stephen Hawking discovered that black holes, which according to Einstein's math, nothing should ever escape and they should only live and grow forever as they just suck in mass around them, something actually does get away. What's called Hawking radiation is emitted from the black hole. So that what is that? What particles being emitted? It's a temperature. It's glowing. And so that means it's losing energy. And so that means it has a lifetime. And that means one day it will be gone and space will be all nice and normal again, right? All you will have left will be the Hawking radiation that's been emitted over these eons of time. Okay, I think something is missing from my understanding of the universe. Yes. I agree with you. Something's missing in my understanding as well, and everybody else's. Here's what I think is missing from mine right now. Yeah. So all of this matter has, including us, passed through the event horizon, ended up at the singularity. It is something in there. Yeah. At the end of time. And also, I know that every law that we have about the universe says that information is conserved. If a black hole will one day end up as nothing, what happened to you and me? What happened to all of that stuff? I mean, this is the central question. So Stephen's initial calculation was the Hawking radiation is information-free, purely thermal. So that would suggest, as you said, that the information, any record of anything that fell in will have been erased. That is weird. The laws of nature are quite clear on this. Information does not get destroyed in the universe. It gets scrambled, but it doesn't get destroyed. So that's what bothered everybody. What happened? What's the end of the story? So what happens? Answer the question. So the end of the story, we're not at the end of the story yet, but in 2019, a series of papers were published. Those papers suggest that Stephen missed a bit in his calculation, very subtle. But it turns out that the radiation is not information free. At the end of the process, then all the information about everything that fell in is imprinted in the radiation, as you would normally expect. But you say, well, what's the picture then? What happened? Because I understand if I take this and throw it into the black hole, it's gone across the horizon, it's gone to the singularity. It's definitely true that nothing comes out of the black hole. So how is this information about this thing getting imprinted in the radiation? And I should emphasize the health warning here. This is ongoing research, and there is no agreed upon picture. This is the cutting edge of research into black holes. One description of our perspective is, we go to the singularity, we get all scrambled up. And then it looks like the interior of the black hole is in some sense the same place as the exterior. You could almost picture wormholes opening up from the interior of the black hole to the exterior. And
very naively, you imagine our bits of information going through the wormholes and coming out again. We end up outside. The information ends up outside in the Hawking radiation. Even as I say this, there are papers being written saying different things. It's really cutting edge stuff. It does look like there is a description of the universe that looks like a giant quantum computer, which does not imply that someone built it. Right? It doesn't imply that we're in a simulation. But it does suggest that there's a good description of reality that you can write down in the form of some kind of network of entangled qubits. Something like that. And I think it's fair to say that the jury is still out on these issues. But what the thing to emphasize is there's something really fundamental going on here. And it almost certainly is associated with the nature of space and time themselves, or space-time. Black holes are an incredible gift because they stretch the limits of our understanding of our universe. We struggle with it, but it's hard for us. You start to come face to face with the structure of space and time. In their strangeness, their extremeness, black holes reveal the hidden structure of reality that governs everything, including our everyday lives. You're studying completely collapsed stars, or the things at the hearts of galaxies, and you're gaining insight into quantum computers and networks of qubits and quantum information. It's the most wonderful thing. It's incredible. The sense of awe and the sense of mystery and beauty increases the more you know about what you're looking at. It doesn't decrease. The number of mysteries increases the more you look at it. So anybody watching this, if it's a clear night, you can go outside. You can look in the direction of the center of the galaxy and wonder about it. But the more you understand about nature, the more mysterious and magical it becomes.